सब जानते हैं कि पठन पाठन एवं शिक्षण का कार्य माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। आइए हम भी इस शुभ कार्यक्रम का आरंभ माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सरस्वती वंदना की टीम को कि वो सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरस्वती माँ की इस वंदना से यही कामना कि जिस उद्देश्य के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की शिलान्यास हुआ वही प्रकाश बनकर हमारे देश में फैले। हम सबको विदित है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड का शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बरही हजारीबाग झारखंड में 28 जून 2015 को किया तथा कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार हेतु इसे देश को समर्पित किया, जिसके पथ पर यह संस्थान अग्रसर है। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। परमादरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा,
डॉक्टर टी.आर. शर्मा, उप महानिदेशक फसल विज्ञान विभाग, और डॉक्टर शर्मा के साथ ही साथ परिषद से विभिन्न विभागों के उप महानिदेशक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें डॉक्टर जैना, डॉक्टर ए.के. सिंह, डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर चौधरी, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी इस समय जयपुर में हैं, वहां से हमारे साथ जुड़ पाए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं अपने महानिदेशक महोदय को, जिनकी देखरेख में इस संपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, और साथ ही साथ ये दोनों संस्थान जो IRI जैसे संस्थान बनाए गए हैं असम और झारखंड में, वो विकास की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के निदेशक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन लोगों के साथ मिल करके इस संस्थान की प्रगति की दिशा में हम लोग काम करेंगे। संस्थान के जो नोडल ऑफिसर हैं झारखंड IRI झारखंड के, डॉक्टर टी.के. बेहरा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही साथ वहाँ पर डॉक्टर प्रिरंजन दास और उनके साथ 9 और वैज्ञानिकों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक उन्होंने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम वहाँ के जो स्थानीय प्रबुद्धजन हैं उनके साथ मिलकर के शुरू किया था। ये सभी वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अमोल शिंदे जी जो निजी सचिव हैं हमारे माननीय मंत्री जी के, इनके प्रयासों से हम मंत्री जी से संपर्क स्थापित कर उनको अपने साथ जोड़ने में सफल हो पाए। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस संस्थान की स्थापना IRI जैसे संस्थान के रूप में झारखंड में की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हम हरित क्रांति लाएं, जो क्षेत्र पहले हरित क्रांति से अछूता रह गया था, और उसी दिशा में सारा प्रयास इस केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। डॉक्टर डी.के. यादव, विशेष रूप से इनका स्वागत, क्योंकि इस संस्थान से जुड़े जितने मामले हैं उनमें इनका विशेष योगदान रहता है। परिषद में जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने में। मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अनुरोध करता हूँ। गिरजेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1000 एकड़ भूमि में संस्थान की रचना कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समकक्ष एक नए संस्थान को खड़ा करना आसान नहीं होता। इस कार्य को यशस्वी ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड के नोडल अधिकारी डॉक्टर टी.के. बेहरा जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड के कार्य प्रगति के बारे में अपना उद्बोधन देने का कृपा करें। Yeah, Dr. Behra, go ahead. Dr. Behra. फोन पर बात करके देखिए। हाँ सर, वही कर रहे। हेलो, आगे डॉक्टर बेहरा। चलिए शुरू करें डॉक्टर बेहरा, आपका इंतजार हो रहा है। सर हाँ ना, मैं तो सर शेयर नहीं हो रहा था, शेयर नहीं हो रहा है ना फाइल। नहीं, शेयर हो गई आपके लिए। ओके सर, डॉक्टर बेहरा फाइल शेयर हो गई, स्लाइड शो में कर दीजिए। ओके सर, स्लाइड शो कर दीजिए। यस सर, चलिए। ओके सर। Honorable Sri Kailash Chandra-ji, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, respected Dr. T. Mahapatra, Secretary Dear, DG ICAR, Dr. T.R. Sharma, Deputy Director Generals, and all the Deputy Director Generals of ICAR, all the ADGs and ICAR, and Dr. A.K. Singh, Director and Vice Chancellor of ICAR-IARI in New Delhi, Dr. Asi Agrawal Ma'am, Education Joint Director, Dean and Joint Director Education of IARI, all heads and professors of these institutes, also the directors of the all ICAR Crop Science Institutes. So this is the Foundations Day, which is done in 18th June 2015,
And on that day, we have also today, we have done some planting of ebony plantation in this foundation day. Saplings of mulberry plants, the Mamus of Alangi, and these 10 scientists who already joined there, but because of the heavy rain still, they did the plantations in the avenue plantation there at their site. And also they will interact with the government agencies like state governments and also ICAR institutes, state universities and the Visa campus, also the institutions and the farmers and children. So today they have a program of this day of Foundation Day. As you know that this Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, laid the foundation stone of ICAR-IARI Jharkhand on June 28, 2015. And that day, it was a memorable day for the history of Eastern India, where we have the new ICAR-IARI came up. It replicates the ICAR-IARI New Delhi in respect of research, education, and teaching. The cabinet approved also in January 18, 2017 for establishment of ICAR-IARI Jharkhand with a budget outlay of 200.78 crores. This Indian Agriculture Research Institute Jharkhand it will contribute to the states like Eastern UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Chhattisgarh. As you know that these states have a total geographical area of 71.84 million hectares, and the net sand area is about 31.43 million hectares. And there is a coupling intensity high, about 150%. And if you see the population density, it is about 600 persons per kilometer, which is in national average is about only 382 persons per kilometer square. The location is very there in the Ranchi airport, it's 130 kilometers. The Goa airport, it is about 105 kilometers. Hazaribagh is 37.5 kilometers, where we have a center from Cuttack also staying there. We have railway stations called Roma Railway Junctions, which is 43.3 kilometers, and Bori is a main block where it is 13.1 kilometers. And it's very near to the National Highway 20, it is 6.6 kilometers from there. This agroecological zone is a center and north eastern plateau regions, which is in the Hazaribagh zone. And the address we have in the Gauriakama is the village where it is situated. And the area is about 1,000 acres, which is got transferred from the state of Jharkhand to the ICAR. If you see the Google map, you can see here the total map which you have mentioned here. It is totally, we have 1,000 acres of land is there. It's having a lot of lands of different type. Topography will be totally different. Some are upland and some are lowland. But only important thing is here. Also, we have the water bodies also lying in here and there, particularly for the irrigations to this particular area. And we have two major dams. One in the Bahadur Dam, which is just near to our campus. डॉक्टर मेरा हिंदी में नहीं बोल सकते हो? सर ये है हमारा झारखंड की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. यहाँ पे जो हमारे वाटर बॉडीज है, वो वाटर बॉडीज जस्ट नियर टू हमारे झारखंड के स्टेट इंस्टीट्यूट के पास है. और कुछ एक बड़ा सा यह है जो कि 120 एकर्स के लेक है, जो कि यहाँ पे हमारा 2-3 किलोमीटर का व्यवधान है, एंड जिससे हम इरिगेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. ये हमारा मास्टर प्लान जो 100,000 एकर्स का, एंड यहाँ पे जो 44 एकर्स की लैंड है हमने मार्क कर रहे हैं ऑन द कॉर्नर साइड में. इसी में आप हमारे जो एग्रीकल्चर और इंस्टीट्यूट खोला गया है. उसके साथ साथ हमारे अदर्स जो केवलिया डैम है जो मैं बताया था 120 एकड़ लैंड है, वो भी जो है इरिगेशन के लिए पूरे एरिया को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. उसके साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट्स की जो वेटनरी फार्म था उसको भी हमको हैंड ओवर किया गया है, जिससे हम वेटनरी और एनिमल साइंसेस की तो रिसर्च और टीचिंग कर सकते हैं. उसके बाद में मास्टर प्लान जो 40 एकर्स लैंड हुआ है, जिसकी बाउंड्री ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एंड फुल एरिया को कवर किया गया है, जिसमें कि मास्टर प्लान के हिसाब से दिस इज द एरिया जो कि हम कहते हैं कि एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग. यहाँ पे 40 रूम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो चुका है, जिसकी हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. उसके साथ साथ जो एरिया है जो कि ब्लॉक हमारे यहाँ पे स्कूल्स की ब्लॉक्स है. एक है स्कूल ऑफ एनिमल साइंसेस, स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देन स्कूल ऑफ क्रॉप साइंसेस. और ये हमारा ऑडिटोरियम है, उसके साथ पॉन्ड है. एक नेचुरल स्ट्रीम यहाँ से गया हुआ है, जिससे हम यूटिलाइज कर सकते हैं पॉन्ड्स और हमारे इरिगेशन के लिए और कैंपस के लिए. ये जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं, इसको हम इट इज स्टाफ क्वार्टर्स. देयर आर 127 स्टाफ क्वार्टर्स,
एंड 25 उसमें से हम बिल्डअप अभी कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, उसके बाद फिर दूसरे बिल्डअप हो सकती है। और दूसरे जो है ये एरिया जो है, इस एरिया में आपका प्लेग्राउंड्स एंड स्विमिंग पूल एंड अदर थिंग्स आल्सो हियर एंड यहाँ पे जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, एंड हियर वी हैव द टू हॉस्टल्स, वन इज बॉयज हॉस्टल्स एंड अदर इज गर्ल्स हॉस्टल। एंड उसके साथ साथ हमारा मैंडेट है to harness the untapped potential through integrations of animal science, fisheries, horticulture, forestry. Because ये जो एरिया है पूरे ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की यूटिलाइज हो सकता है, जिससे कि बहुत फिशरीज भी, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री को हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ मेन टारगेट है हमारा रिसर्च, जो कि फार्मिंग सिस्टम रिसर्च की काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस के लर्निंग के लिए हायर एजुकेशन आल्सो वी कैन डेवलप एज एग्रीकल्चर एजुकेशन, which is our main target for this particular institute, particularly for the zones of the eastern zone, and we can put it there. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए और कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, उसके भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में हमारा एजुकेशन है, जिससे कि जस्ट लाइक ICAR-IARI न्यू दिल्ली, ऑल्सो वी हैव टू रेप्लिकेट दैट वन। हम रेप्लिकेट करेंगे वहाँ पे, जो हमारे स्टूडेंट्स जो विदेश से भी आएंगे और यहाँ के इंडिया का स्टूडेंट्स ICAR के थ्रू से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसी से लेके उसको हम उनको रिसर्च और टीचिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिससे वैरायटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। और जो वाटर बॉडीज है, वाटर रिसोर्सेस है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पानी का कोई समस्या नहीं है, ओनली समस्या वाटर बह के चला जाता है, जिसकी हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसके माध्यम से। और क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च में वी कैन आल्सो डू इट, एंड आल्सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स आल्सो वी कैन डेवलप देयर। एंड मैं इसलिए बताया कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और सब मिला के हम एक डाइवर्सिफिकेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम ईस्टर्न इंडिया को बहुत सारे रोजगार दे सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सारे वैल्यूएशन टूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमारा एक्सटेंशन मॉडल वहाँ पे डेवलप हो सकती है, पर्टिकुलरली फार्मिंग सिस्टम रिसर्च की जो डेवलपमेंट मॉडल्स होगा उसके डिफरेंट केवीकेस के माध्यम से, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिरसा के माध्यम से, और एक्सटेंशन स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के माध्यम से उसको हम यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ विलेज लिंकेज प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है ICAR में, उसको भी हम वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब जो एक्सटेंशन, टीचिंग और हमारा रिसर्च, इस तीनों कंपोनेंट्स जैसे IRI में है, हमारा वहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा। उसके साथ मेजर स्कूल्स वहाँ पे है, जो कि campus director is one of these, head of this organization. Then we have registered joint director administration, joint director research, education and extension. Also we have 3 schools, so 3 coordinators. One is School of Crop Sciences, School of Natural Resource Management and School of Animal Science and Fishery Sciences. उसके साथ साथ स्कूल ऑफ क्रॉप साइंसेस में हमारे 5 डिवीजन है, जिसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हॉर्टिकल्चर साइंसेस, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल साइंसेस। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसमें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। स्कूल ऑफ एनिमल साइंस एंड फिशरी, एनिमल एंड फिशरी साइंसेस, वी हैव एनिमल एंड पोल्ट्री साइंसेस एंड फिशरी साइंसेस एंड एक्वाकल्चर। इसमें जितने ही हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज है, जितने एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको हम टेकअप कर सकते हैं और पर्टिकुलर ईस्टर्न इंडिया के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये हुआ था इनॉग्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कम एकेडमिक बिल्डिंग बाय आवर ऑनरेबल Radhaman Singh ji, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, on January 27. Around 5,000 farmers, different corners from the eastern states, has come up here, and also we organize different activities also there in this foundation day. ये कुछ ग्लिम्स है, जिससे कि हमारा ये बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के हम इनॉग्रेशन उसी दिन जनवरी 27 में किया गया है। उसके साथ साथ ये जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कम एकेडमिक बिल्डिंग, इट इज टोटली नाउ फंक्शनल। उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और लिफ्ट फैसिलिटी सब कुछ किया गया है। ये G+2 में है, जिससे कि ग्राउंड फ्लोर और 2 फ्लोर्स है। एंड इसके साथ इसमें बैठने के भी 40 साइंटिफिक स्टाफ्स के लिए और 20 टेक्निकल स्टाफ की व्यवस्था किया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में पूरे ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंक्लूडिंग जॉइंट डायरेक्टर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफिसर्स आर आल्सो देयर, एंड 19 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को इसमें यूज कर सकते हैं अभी। एंड ऑल्सो वी हैव फैसिलिटी फॉर कम्युनिटी रूम, ऑल्सो 4 क्लास और 4
लेबोरेटरीज ऑल्सो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरे बिल्डिंग अभी इस्तेमाल हो सकता है, ओनली हमारा कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर कनेक्शन हो जाए तो इसको अर्जेंटली हम यूटिलाइज और फंक्शनल कर सकते हैं। और जो फर्निशिंग है उसमें जो प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ फर्निशिंग, सो इट विद इन 1 or 2 months द फर्निशिंग आल्सो विल बी डन। ये ऑनगोइंग वर्क्स जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें क्वार्टर्स है एंड हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है, हमें बताया कि 350 रूम्स है, 200 रूम्स गर्ल्स की है। गेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन में फाइनल होने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन बाउंड्री ऑलरेडी डन, बट जो 1000 में नहीं हुआ, ओनली 44 acres and 15 acres farms, the boundary wall are already been constructed. We also have a smart class developing there, and then furniture, fixtures, libraries is going on. This is the virtual image of the guest house which we are going to build with this building. It is the building where this guest house all in the progress. ये अभी हमारा जून तक खत्म हो जाना था, but COVID-19 की वजह से इसको थोड़ा सा लेट हो रहा है. So they told me this CPW by August 2020 they will finish this one. And also this was the foundation stone was also laid down by Honorable Agriculture Minister's Welfare on January 27, 2019. ये बॉयज हॉस्टल्स एंड गर्ल्स हॉस्टल का अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे कि अभी कुछ दिन बंद हो गया था, बट नाउ इट इज अगेन स्टार्टेड। एंड दिस इज द स्टाफ क्वार्टर्स, वी हैव 25 स्टाफ क्वार्टर अभी बन रहा है, जिससे टाइप 2 और से लेकर टाइप 7 तक भी है। देन डेवलपमेंट ऑफ फार्म सेकर्स अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे हमने 15 एकर्स का फार्म ऑलरेडी उसके बाउंड्री वॉल में लिया है, जिससे कि 5 एकड़ की जो मैं बहादुर डैम की बता रहा था, उसमें वाटर रिसोर्सेस है, वाटर बॉडीज है, जिससे कि हम यूटिलाइज कर सकें इसको इरिगेशन के लिए। एंड अभी हमारे नर्सरी अभी बो चुके हैं, एंड आई थिंक बाय दिस जुलाई अगस्त विल गो फॉर प्लांटिंग ऑफ दिस राइस। एकेडमिक एक्टिविटीज, जैसे हमारा फाउंडेशन स्टोन हुआ था 2015 में, उसी समय से ही हमारा एकेडमिक्स बेस्ट एमएससी का स्टार्ट हो चुका था, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में 15-16 में वी हैव ऑलरेडी टेकन 9 स्टूडेंट्स फॉर दिस झारखंड, एंड वो लोग हमारे IRA न्यू दिल्ली में स्टडी किए हैं, कोर्स वर्क किया है। उसके बाद वो लोग झारखंड में जाके अपना रिसर्च किया है। हमारे ICAR का जो इंस्टीट्यूट है, NRI कटक का स्टेशन है हजारीबाग में, उसमें स्टूडेंट्स काम किए हैं, और रांची में भी हमारे स्टूडेंट्स काम किए हैं, जिसकी थीसिस लेके वो भी अपना PhD MSc डिग्री लिया है। उसके साथ साथ MSc का ऑलरेडी हमारा 3 सालों में 30 स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिग्री ले चुके हैं IRI से, और वो अभी भी हमारे 2 बैच उसमें काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बैच स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और एक बैच स्टूडेंट वहाँ पे रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे इनटेक स्टूडेंट्स जो कि हमारा प्लान में हुआ था, इससे MSc 60 स्टूडेंट, हम जब ये पूरे फंक्शनल हो जाएंगे तब MSc 60 स्टूडेंट एंड PhD 109 स्टूडेंट्स ले सकते हैं। लेकिन प्रपोजल में हमने कुछ ग्रेजुएशंस का भी व्यवधान कर सकते हैं, जो ICAR और मिनिस्ट्री से हम बात मतलब टेकअप कर सकते हैं इशू को, जिससे कि हम BSc एग्रीकल्चर वहाँ पे कर सकते हैं, और MSc PhD का भी सीट्स थोड़ा सा कम घटा के हम BSc एग्रीकल्चर भी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा नया पोस्ट भी यहाँ पे क्रिएट हुआ था, टोटली 199 पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड, जिसमें कि 98 साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में 6, और एडमिनिस्ट्रेटिव में 13, एवं टेक्निकल में जो कि 82 टेक्निकल पोस्ट इज क्रिएटेड। बट अभी जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हमको अप्रूव किए हैं 2 सीनियर मैनेजमेंट, एंड टोटली 60 दे हैव अप्रूव्ड, एंड आउट ऑफ व्हिच 12 already joined. So 2 in the administrative post, that is joint directors and controller already joined, and 10 scientists join करके अभी वहीं पे काम कर रहे हैं। So ये जो scientist है, हमने group of scientists they already joined there, and this is the discipline wise seats. earlier हमने 10 स्टूडेंट लेते थे, अभी हम इस साल से हमने शुरू करेंगे 32 स्टूडेंट लेके, 11 डिसिप्लिन में 32 स्टूडेंट लेके काम कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोपोज इंफ्रास्ट्रक्चर है will go for school building, farm development, library, all this are already there in the EFC, also in the cabinet report, so which also can be applied or take out particularly for this further step. So I think I should acknowledge the honorable ministers of Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, Secretary TR and DG ICAR, Deputy Director General of Crop Sciences, ADGs and directors of this institute, who is giving a lot of scheme for this ones. Our previous directors also very much of interested, Dr. A.K. Singh sir, and joint directors, and all the members, and all the previous OSDs, and now Dr. Dipankar Maidi is also here. He is also OSD, is working there.
and also previous nodal officer Bikumi. There are a lot of other people are there who is involved in these things, work sections of ICAR and team of scientists. So thank you very much. This is the nutshell of this program which is going on here. Thank you. Mahapatra ji. हेलो, मेरे एक नेक्स्ट मीटिंग में मुझे जाना है। अच्छा सर, तो सर आप अपना उद्बोधन सर पहले कर दीजिए। तो प्लीज साहब बता। जी साहब, देखिए आज 7 मीटिंग है और मीटिंग शुरू हो चुकी है दूसरी, तो मुझे उसमें जाना है। हाँ सर, प्लीज सर, प्लीज गो अहेड सर। मेरा थोड़ा हो नहीं रहा था मेरा कहीं अटक रहा था, बट एनीवे सर प्लीज गो अहेड सर, मैं सुन रहा था। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद झारखंड स्थापना दिवस के ऊपर हमारे बीच में विराजमान हमारे डीजी साहब महापात्रा जी और उप महानिदेशक टीआर शर्मा जी और हमारे यादव साहब, अभी जिनका उद्बोधन था बेहरा जी, और हमारे निदेशक माननीय के सिंह जी और सभी अधिकारीगण और सभी हमारे साइंटिस्ट भाइयों और बहनों, आज मैं पूरी ये मीटिंग के अंदर रहना चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से कुछ तो ये लिंक लेट सेट हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रही टेक्निकल। नहीं तो मैं पूरा सुनता, आपके बीच में रहता, लेकिन फिर भी मैं क्षमा चाहूँगा। और आज जो ये स्थापना दिवस है इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो झारखंड है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी हमारे को बेहरा जी ने बताई, और बहुत ही कम समय के अंदर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया और इसके बाद में स्थापना के बाद में निरंतर इसके अंदर काम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इसलिए मैं स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस संस्थान की, जैसा कि उस क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यकता थी, और अभी जैसा कि पहले बताया गया कि हरित क्रांति शुरू हुई, और हरित क्रांति के बाद ये क्षेत्र उस क्रांति से महरूम रहा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के किसानों को तो नुकसान हुआ, लेकिन इस राष्ट्र का भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो मेरे सामने टीम बैठी है, ये और हम सब मिलकर उस की पूर्ति जरूर करने का प्रयास करेंगे, और अगर हम सब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति अवश्य कर पाने में कहीं न कहीं सक्षम होंगे और सफलता भी मिलेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विजन लेके चल रहे हैं कि हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और आत्मनिर्भर बनाना है तो उस लक्ष्य को पूरा करना हम सब के जिम्मे उन्होंने छोड़ा है, और अपने भरोसे के ऊपर ही उन्होंने कहा है, और वो भी ऐसी परिस्थितियों के बीच में हमें करना है जब कोविड जैसी महामारी हमारे इस देश के अंदर पैर पसार चुकी है और पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से तांडव मचा चुकी है, और वहां पर देश के अंदर और दूसरे देशों के अंदर तो हजारों हजारों लोगों की जानें चली गई। और अमेरिका जैसा राष्ट्र जो आर्थिक स्थिति से मजबूत है, इंग्लैंड, चाइना, ये सारे इन्होंने इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिए। वहां एक एक दिन में हजारों हजारों लोगों की जानें जा रही है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर सही निर्णय लिया, और जिसकी वजह से इस देश के अंदर हजारों लोगों की जानें बची। अगर मैं बात करूं
जिस समय लॉकडाउन लगा था तो उस समय इस देश के अंदर न तो पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज था, न पर्याप्त मात्रा में फेस कवर थे, न उस समय हॉस्पिटल के अंदर टेस्टिंग के इक्विपमेंट थे, न लैब्स थी, और न ही हमारे वहां पर दूसरे जो पीपीटी किट थे, और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर स्वयं पेशेंट होता जा रहा था। तो ऐसे समय के अंदर जब डॉक्टर ही पेशेंट अगर बन जाता तो इस देश को कौन बचाता। लेकिन ऐसे समय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, और जिसकी वजह से आज इस 2 महीने का जो लॉकडाउन रहा, इस बीच में हम सारी वो व्यवस्थाएं कर पाए कि जिसकी वजह से आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फेस कवर, सैनिटाइज और अन्य हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट, पीपीटी किट, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी। तो जिसकी वजह से आज सबसे बड़ा काम ये हुआ कि हमारे लोगों के अंदर और देश के अंदर एक जागरूकता आई। आज वो अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचा सकता है, तो आज वो खुद ही 2 गज की दूरी और उसका ध्यान रख रहा है, फेस कवर, सैनिटाइज। ये सबसे बड़ा जन जागरण का काम भी इस 2 महीने के अंदर हुआ, जिसकी वजह से हम आने वाले समय के अंदर इस महामारी से निश्चित रूप से हम निजात पाएंगे। लेकिन इस बीच में हमें ये माध्यम भी, आज वर्चुअल रैली का जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सब बात कर रहे हैं वर्चुअल के माध्यम से, तो ये एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में हमें जुड़ने का भी इस लॉकडाउन के अंदर हमें सिखा दिया कि हम दूर हैं लेकिन पास में भी है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आज हमारे इससे जुड़े हैं, और भविष्य के अंदर भी हमें इसी तरह, जब तक ये महामारी का कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती, तब तक हमें इसी तरह एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। और इस कार्य को हम 2 गज की दूरी और सैनिटाइज इसका उपयोग करते हुए और अपने को अपने काम में भी कहीं अड़चन नहीं आए। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान पूरे देश को संभाला और उसके बाद में जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की, तो आज 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक की पैकेज की घोषणा हुई है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर भी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के अंदर खर्च होंगे। और उसके अंदर जब खर्च होंगे तो निश्चित रूप से हमें भी उसके अंदर देश के जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है, उसके अंदर हमारा कितना योगदान हो सकता है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और आज जिस तरह से परिस्थितियां है, इसके अंदर जलवायु परिवर्तन की हम स्थिति देख रहे हैं कि आज मौसम एक जैसा नहीं रहता, और जिसकी वजह से फसल है, कभी बरसात ज्यादा हो जाती है, कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, कभी हवा कोई और चल जाती है, जिससे किसान को नुकसान होता है। इस चीज के ऊपर हमें काम करना है। जैसा कि हमारे इस संस्थान के द्वारा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है या हॉर्टिकल्चर, और इन सब के ऊपर जिस तरह से आप पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के ऊपर आप सब काम कर रहे हो, इस काम को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज ये चीज हम निश्चित रूप से आज मैं देख रहा हूँ कि अपन काम कर रहे हैं। हमारे ICAR-IARI के अंदर भी खूब काम होता है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर पूषा के अंदर भी हमारे अधिकारी सारे लगे रहते हैं, हमारे साइंटिस्ट भी लगते हैं। अन्य अन्य संस्थाओं के अंदर भी मैं जाता हूँ तो वहां पर अपन सब हमारे साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए बीज का आविष्कार कर रहे हैं। वहीं पर नई फसल के अंदर किस तरह से हम उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं, इस सारे के ऊपर रिसर्च होता है। और किस तरह से हम उनको एजुकेटेड करके और हमारे स्टूडेंटों को एग्रीकल्चर के की जानकारी दें, और जिससे कि वो आने वाले समय में किसान अपने गांव के अंदर वो युवा जाकर और उसको स्थापित कर सके और आत्मनिर्भर भारत बने। इस और हम सबको काम करने की निश्चित रूप से आवश्यकता लगती है। तो इसके लिए मेरा तो यही कहना है कि आज स्थिति है कि जैसा कि हमारे जो हम लोगों ने काम किया, जिसकी वजह से इतने सालों के अनुभव और जिस तरह से हमने काम किया, तो आज भारत जहां कोई एक समय था कि हम हमारे उत्पादन जो इंपोर्ट करते थे, आज हम जैसा तिलहन है, दलहन के अंदर हम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि हम दलहन के अंदर आत्मनिर्भर बने और एक्सपोर्ट करने लगे। अब हमारे सामने चुनौती है कि तिलहन के अंदर हम किस तरह से एक्सपोर्ट करें या उसको उसके ऊपर आत्मनिर्भर हो। इन सारी चीजों को ध्यान में मध्य रखते हुए और मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां हैं, और आप सभी हमारे जो मेरे साइंटिस्ट भाई बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि हमें
बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। और झारखंड के अंदर जैसा कि हम इस क्षेत्र के अंदर कोई वैसे पानी की बात करें तो भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें काम करने की और अपना जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है पानी की जलवायु के अंदर देखें तो जहाँ पर बात मैंने पहले की है, तो अपने गांव को एक गांव हमें हर साइंटिस्ट को गोद भी लेना चाहिए। जो मेरे स्टूडेंट भाई है उनसे भी मैं तो ये कहूंगा कि अपने प्रयोग तो आप कर रहे हो, लेकिन उसको धरातल पर हमने कितना उतारा, गांव में जाकर हमने कितना किया। तो अगर खुद अपना काम करता है तो उससे उसको प्रसन्नता मिलती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने इस समय आप सबसे आग्रह करता हूं और यही कहूंगा कि हमारे इस रिसर्च सेंटर का जो अपना झारखंड का अपना जो है कृषि अनुसंधान परिषद, इसका नाम पूरे देश के अंदर कैसे हो, इसके लिए हमें और क्या करने की आवश्यकता है। आज गांव के अंदर जहां डाइवर्सिफिकेशन की बात है या फसल के अंदर उधर जाने की आवश्यकता है, या हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कैसे कर सकते हैं। आपने अपने रिसर्च सेंटर के ऊपर तो आपने निश्चित रूप से एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, लेकिन गांव के किसान ने अगर उसको नहीं किया तो मैं सोचता हूँ कि उसमें अपने को सिर्फ अपने सेंटर के ऊपर बैठकर हम अच्छी खुशियां मना सकते हैं कि मैंने ये कर लिया, इसके अंदर मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने 1 एकड़ के अंदर हमने 5 लाख रुपए कमा लिए या 10 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट इसके अंदर मैंने अपने इसके अंदर इनकम की है। उससे कुछ नहीं होगा। हमें गांव का किसान के पास में ये इसके प्रति जागरूकता नहीं आएगी या वो खुद जमीन पर नहीं करेगा, तब तक मैं अच्छे भाषण दे दूं या आप हमारे अभी जैसा कि बेहरा जी ने भी कहा है और यादव साहब ने भी बात रखी है, नहीं अपने AK सिंह जी ने, तो मेरा ये कहना है कि हम हमारे किसान को लाभ देने की उद्देश्य से हमें काम करना चाहिए और किसान को लाभ देने के लिए उसको हम जाकर उसके खेत में उसको समझाने की कोशिश करें, ट्रेनिंग देने का काम हो तो वहां जाकर भी हमें करना चाहिए। वरना आज इस देश के अंदर किसानों की ये स्थिति है कि कई राज्यों के अंदर हम देखते हैं किसानों को आत्महत्या तक करने की नौबत आती है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमारे होते हुए अगर देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है तो कहीं न कहीं हमारे में हो सकता है कमी हो, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो उस तक या तो पहुंचता नहीं है, और अगर पहुंचता है तो वो कर क्यों नहीं पाता है। तो इस काम को देखने की आवश्यकता है और इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय किसानों के जो आज भारत सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई है, ये रिसर्च सेंटर है जो अपना काम करेगा, हमारे साइंटिस्ट काम करते हैं, लेकिन हमारे को योजनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस बात के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है और किसानों को वहां तक इस बात की जानकारी मिलेगी आज कौन सी योजना है, किसके माध्यम से अपन प्रोसेसिंग बीज तैयार करना, बीज के बाद में उसको ये भी जानकारी होनी चाहिए वो फसल का उत्पादन करे, उत्पादन करने के बाद उसको उसके बाद में वो कहाँ पर उसको स्टोरेज करे, स्टोरेज के बाद वो कहाँ पर उसको मार्केट मिले, कौन सी प्रोसेसिंग होती है। किसान को आज अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक किसान के सामने टमाटर है, टमाटर बेचता है तो टमाटर उसके सिर्फ कितने रुपए, टमाटर कई बार किसान है वो बेचता है 2 रुपए और 3 रुपए किलो के अंदर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आलू 2-3 रुपए किलो के अंदर बेचता है, वही आलू और उसकी अगर आलू की चिप्स बन जाती है तो वो बन जाता है सीधा उसका 300 रुपए किलो में चला जाता, उसकी रेट हो जाती है। वही सॉस है, जिस टमाटर को 2 रुपए किलो बेचता है तो और उसकी सॉस की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर और उसने बेच दिया तो उसकी रेट उसकी 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसके बारे में भी किसानों को हम साथ साथ कैसे जागरूक करें, इसके ऊपर भारत सरकार बहुत पैसा लगा रही है और अभी जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च होगा तो उसके अंदर भी जो ये पैसा है वो किसानों के प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर लगने वाला है। तो इसके बारे में भी हम जानकारी दें और अपने रिसर्च सेंटर के माध्यम से किसान अपनी ओर कैसे आकर्षित हो। गांव का बैठा हुआ किसान हमारे यहाँ पर आकर पूछेगा तभी हमें कि हाँ उसकी प्रति ये एक जागरूकता होगी। हेलो, हाँ हेलो, हाँ मैं जुड़ रहा हूँ बस 2 मिनट में 5 मिनट, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि गांव में बैठा किसान है वो हमारे इस
संस्थान के अंदर कैसे आए, और वो जब इस ओर आकर्षित होगा तभी किसान को अपनी ये होगा कि वास्तव में किसान है वो हमारी ओर आकर्षित हुआ है। तो किसान का मुख है वो इस साइड आना चाहिए कि मेरे को अगर कहीं पर न्याय मिलेगा या मेरी समस्या का समाधान होगा तो वो इस संस्थान के अंदर होगा। इसलिए हमें काम करने की आवश्यकता है। नए नए रिसर्च किया जो आप सभी मेहनत कर रहे हो, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कम समय के अंदर आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट जिस तरह से बताई है, बहुत अच्छा काम किया है, और इस काम को मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी के और हमारे सबके सपना है, उसको साकार हम सबको करना है। इसके लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से उस दिशा की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। और महापात्रा जी का उद्बोधन अभी आपको पूरा टेक्निकल जानकारी तो वही दे सकते हैं। मैं तो एक साधारण किसान हूँ और किसान की बात ही करता हूँ। मेरे सामने जो समस्या आती है वही मैं शेयर करता हूँ। तो इसलिए बाकी टेक्निकल हमारे यादव साहब भी बैठे हैं, वो भी आपको अच्छी जानकारी दे देंगे अभी। तो मैं आपके बीच मेरे का मीटिंग में मेरे को जाना है, इसलिए मैं आप सबसे इजाजत लूंगा। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब ये आप मन में ठान लोगे और तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को आप पूरा करेंगे। और बाकी रही बात ये लॉकडाउन और जिस तरह से कोविड की महामारी खत्म होती है तो उसके बाद में मैं स्वयं एक बार आपके संस्थान में वहां पर आऊंगा और देखेंगे कि आपने धरातल पर कैसा काम किया और कैसे इसको आगे बढ़ा रहे। तो निश्चित रूप से और मुझे भी देखने का अवसर मिलेगा, और मैं जब तक आऊं उसमें और आप कई जो अभी बताया कि पूरा करना है कमियां, तो उनको भी आप पूरा करेंगे ऐसा विश्वास है। आप सब जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बस ऐसी शुभकामना देता हूँ कि आप सब आगे बढ़े और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में हम सबका योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हम लोगों के साथ आए, बहुत खुशी की बात है सर। और ये तो एक नया संस्थान है और 5 साल हुआ है, और धीरे धीरे अपने हाथ पकड़कर उसको चलाना हो रहा है। तो नहीं, अच्छा काम शुरुआत डीजी साहब अच्छी हो गई है सर। और ये जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद है कि बहुत ही कम समय के अंदर ये पिकअप कर लेंगे और देश के वो दूसरे संस्थानों के बराबर मुख्य धारा में जैसे वो भी पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इनकी टीम पर मुझे पूरा भरोसा है। सर पिछले 1 साल से आपके दिशा निर्देश से काम चल रहा है और प्रगति बहुत गति पकड़ी है सर। और जल्द से जल्द जो भी काम थोड़ा बहुत बाकी है पूरा हो जाएगा, आपको मैं आश्वासन देता हूँ और भरोसा देता हूँ हो जाएगा सर जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माफी चाहूंगा सबसे, इजाजत लेता हूं। नहीं सर अच्छा लगा आपकी बात सुनकर सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चलिए आगे कार्यक्रम चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी को सुना। देश की लहलाती फसलों से देश की तकदीर लिखी जाती है। भारत जैसा विविधताओं से भरा देश तथा विविध प्रकार की फसलें, इन सब का प्रबंधन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फसलों पर अनुसंधान को दिशा देते हुए हमारे साथ एक महानुभाव हैं डॉक्टर टी.आर. शर्मा जी, उप महानिदेशक फसल विज्ञान। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमें संबोधित करें। डॉक्टर टी.आर. शर्मा जी। Very good afternoon to all. Chief guest of the day, Honorable Union Minister Sri Kailash Chaudhary ji, Director General in ICAR, Dr. Mahapatra ji, my colleagues, Deputy Director General Dr. Jaina, Dr. Chaudhary, Dr. A.K. Singh, Sir Dr. Agarwal ji, Dr. A.K. Singh, Director IARI, Dr. Yadav, my colleague, ADG Seeds and coordinator of this institute, Dr. T.K. Vera, Nodal Officer, can see Dean, Dr. Rashmi Agarwal, and distinguished colleagues from IRI main campus as well as IRI Jharkhand campus. I can see Dr. Priyaranjan Kumar. First of all, I would like to congratulate all my colleagues
both from IARI Jharkhand for celebration of this 5th Foundation Day, which we are going to celebrate today. In fact, only 5 days back, we decided, when we were reviewing the progress of this institute along with my colleagues, Dr. D.K. Yadav and Dr. A.K. Singh, Dr. D.K. Yadav floated this idea that now institute is ready and we should try to celebrate Foundation Day. Then immediately we decided that let us do it through online video conferencing and also organize plantation drive at the campus. I was not sure that within these 3-4 days, my colleague, Dr. Priyaranjan and Dr. A.K. Singh and Dr. Yadav, they could manage in such a best manner to organize this whole program by inviting our Honorable Union Minister as well as for this whole program. So I would like to compliment their efforts and also the way we have planned to celebrate this whole occasion. Dear friends, Foundation Day is a day where we do introspection, what we have done past, and also try to set agenda for the future. We have seen from the presentation of Dr. Behra that during these past 5 years, the Institute has made tremendous progress as far as infrastructure is concerned. We have seen that such a state-of-the-art and beautiful building which they could build during these 2-3 years, that's a commendable job. I would say that it could only happen because we have a mother institute, IARI New Delhi, who is acting as a mentor to develop these new institutes in the country. And it shows from their mentorship that not only we could develop state-of-the-art infrastructure in Jharkhand area, but we could also start master and PhD program in different subjects. Because to run an institutions or to establish an institution, building infrastructure is not enough. Until unless we equip these buildings with human resource as well as state-of-the-art infrastructure, we cannot develop an institute. I'm happy to share that even during this month, we could depute 10 scientists as told by Dr. Behra at the main campus at Jharkhand, and all are very young scientists. I was interacting to them that you will be remembered as a pioneer of developing this particular institute. So naturally, your hard work is very, very important. I also discussed last week with them that while developing infrastructure, please don't compromise with the quality of lab infrastructure, quality of equipment, and anything which you are taking inside the building. Unless we look for quality, we cannot look for quality research and quality education. So I'm sure that under the guidance of our Director General, Dr. Mahapatra, and with the close collaboration and mentorship of IARI Director and also IARI staff, I'm sure this institute will become a flagship institute of Indian Council of Agriculture Research. Understand developing a new institute is very, very difficult. Experience says that when you enter in a new building, even if it is your own house, there are so many problems. Many times there is no water, electricity points doesn't work. Through the occupant of that building, they have to face all these problems, rectify those problems. So my advice to my young colleagues, Dr. Priyaranjan Kumar and his there, was that try to see that we should try
plug all holes in the beginning itself and try to maintain this building as a building in our research. As far as research program goes, it's a replica copy of IRI New Delhi, except that we are going to start 2 new programs. That is, we have a School of Animal Sciences and Fisheries. That makes it different from IRI. It is a typical university system wherein all domains of agriculture, they work together, starting from crop sciences and fisheries, animal sciences. And in that type of environment, it gives us entirely different type of an opportunity to interact with our colleagues across the domain while working and solving different problems related to Indian agriculture. In this context, I would like to say that although presently we have only scientists and colleagues from crop sciences based at the main campus at Jharkhand, but very soon we would be expecting that our colleagues from other domains like animal sciences and fisheries, they will also be placed and start their program at that particular institute. So as clearly mentioned by our Honorable Minister, that the basic objective of this institute is to tackle to the problems related to Eastern India. And that's why if you see the programs which were presented by Dr. Behra, they were very nicely developed and also targeted towards the Eastern Indian problems which we are facing in agriculture. So by using all latest approaches and latest technologies, I'm sure that we would like to solve all those problems while developing technologies for national and international significance. So that's how this institute will develop in future. And my best wishes to all the colleagues from IRI Jharkhand and also IRI New Delhi, because they are the main persons those who would develop this institute in such a short span of 5 years and making it functional. So congratulations to all on this foundation day, and I wish that next year we will celebrate this particular day on the main campus itself, and we all will visit there and see with our own eyes what Priyaranjan Kumar has developed during this 1 year and how we can start our classes there. So thank you very much for inviting me here. Thank you. Thank you. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके शब्दों से निसंदेह हम सबको एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की टीम को नई ऊर्जा, नया इंस्पिरेशन, नया डिटर्मिनेशन, ये सब प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रूपी वृक्ष, जो पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट रिसर्च नेटवर्क है, इसकी जो जड़ है एवं निरंतर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सारे संस्थानों में अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार को निर्देशित करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा सर, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष। उनसे अनुरोध है कि हम सबके समक्ष अपना अभिभाषण प्रस्तुत कर हम सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर टी महापात्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर A.K. Singh, Director IRI, my colleagues from the headquarters, particularly the Deputy Director Generals, and many of them are here. Dr. T.R. Sharma, of course, DDG Crop Science, who has already spoken. Dr. S.K. Chaudhary is visible in front of me. I believe other DDGs are there. Dr. Agarwal and Dr. Jena, and maybe a few others are there. And also ADG colleagues, Dr. DK is here. I don't know whether anybody else is here in the headquarters. Dr. Rasmi Agarwal, Joint Director Education. And of course, Dr. A.K. Singh, DDG Extension is also there. And Dr. A.K. Singh, DDG Horticulture is also there. They are all, without video, so you only see from their names. So maybe other DDG colleagues are here. I don't take names. Okay, Jana Saab is here. Let's come back to the main screen.
Okay, so I also extend a very hearty welcome to all of you and hearty congratulations on 6th birthday of the Institute. The first birthday was on 28th June 2015. That time I was director of the Central Rice Research Institute, Cuttack, and I have seen the crowd, the huge crowd. And in fact, I was there behind the stage, and I have seen, how things were happening. Dr. Eppen was there, and and several others were present. So that day, I'm eyewitness to all the kind of happenings on 28th June 2015. And today, after 5 years, we are probably for the first time celebrating this Foundation Day, thanks to Dr. T.R. Sharma, DDG Crop Science, and also thanks to Dr. A.K. Singh and his colleagues for making this happen in a very short notice, as Dr. T.R. Sharma said. Not easy to arrange, but this COVID enforced us a new pathway, and this is now a new normal, that we have to interact through digital platforms without moving and spending time and money. So it's cheaper, it is economical, obviously, and time required is so less. So that is a good thing that happened. Dr. A.K. Singh said that I have to speak for 30 minutes, and I said I'll speak for 20 minutes. And the program was supposed to be over by 12:30, and it is going to be 12:50. So we have crossed all limits. And of course, we had to wait for the Honorable Minister. But I must thank Honorable Minister for sparing his valuable time, because that's what, when we were discussing, I suggested Dr. A.K. Singh that we should request him to be there on the first Foundation Day celebration, not 6th Foundation Day, but first Foundation Day celebration. Leave aside the first Foundation Day, which was the stone laying ceremony by Honorable Foundation ceremony by Honorable Prime Minister. So let me express our sincere gratitude to Honorable Prime Minister for putting stress and emphasis on Eastern India, and for bringing green revolution and taking this historic step in bringing two IRI-like institutions in Eastern India, Eastern and Northeastern India. So this is a historic decision. The thinking behind this could be that Eastern India, and obviously it is very obvious and then visible that Eastern India is lagging behind, so it was required. So given that thinking behind, maybe there are other thinking thought processes going on, and so our sincere gratitude to Honorable Prime Minister for these two institutions, IRI-like institutions. One is that enabling situations to be created by these institutions in Eastern India, so that we have green revolution and benefits of new revolutions, imparted to the farmers and other stakeholders in Eastern India. But at the same time, expanding the footprints of IRI, as it is in Delhi, though it was initiated in Bihar, again part of Eastern India,
but today it is in northwestern part of the country. So given that situation, so obviously it has significance that IRI expanding its foothold and contributing to developments through these institutions in other parts of the country, and particularly the regions which are lagging behind as compared to the other regions. That's a very historic decision that IRI, if it is doing so well, why not in Eastern India where it is lagging behind, the region is lagging behind. So it's a very historic step and decision in that sense. So in this 5 years intervening period, this period has been really full of trials and tribulations and hardships. Dr. D.K. Yadav knows, because he handles this, how many difficulties we have faced in terms of, bringing these, boundaries and then, building and all that what Dr. Tushar Vera was showing. And of course, now Dr. Dipankar Maiti, who was then and now is director of CRRI Cuttack, NRRI Cuttack. So he continues also to be the head of the regional station of the institute at Hazaribagh, and he is closest. So obviously, he has been also there from the beginning to struggle. And there are others. There are many others. I don't want to really take names. And of course, those days when it was inaugurated, Dr. Ravinder Kaur was in charge director and of IRI, and she was also putting a lot of efforts to set things right in initial days. So there are many players who have played very significant role, and of course, previous DDGs and particularly Dr. Sandhu, was trying his best. And subsequently, of course, DDG Horticulture, Dr. A.K. Singh was looking after the crop science division. So many players and all of them in their own ways contributed to what it has been today, it has become today. And there are many things to be done. Of course, now we have two stalwarts, Dr. T.R. Sharma as a DDG Crop Science, Dr. A.K. Singh as a Director IRI, and obviously, the IRI-like institutions are in the safe hands to prominent scientists, not only nationally but globally reputed, and who know the value of education, value of research, and development. So I am sure it will be pushed forward at a faster pace. So Dr. A.K. Singh, so I thought those said that 20 minutes might take a little more, and Honorable Minister is not there. And maybe another 20 minutes, so I'll take to finish it up. So, of course, Honorable Minister Radha Mohan Singh Saab also played a very significant role in this. Always he used to monitor this personally, and now the Honorable Minister Sri Tomar Saab, Honorable Agriculture Minister, and also Minister of State Honorable Kailash Chaudhary ji, both of them are taking interest. In fact, just few days before, I was, Honorable Minister called me, and he specifically asked about the progress with regard to IRI Assam and IRI Jharkhand. So I gave him the brief that where we are, and he insisted that why we can't have students stationed there and from the coming session, and why we can't have functional universities. Given that Honorable Prime Minister has led the foundation, we must be reviewing this progress weekly basis and then monthly basis at higher levels.
and at my level again, maybe at least quarterly. So these reviews are to be in place so that we ensure that this batch of students which are going to come in September, they go there and study, and our teachers also, those who have been transferred for IRI Jharkhand, Dr. A.K. Singh says that 9 of them have joined, and they should be stationed there and then look after the day-to-day activities, and then carry out all that unfinished task, and speed up the processes. That's most crucial. Speed up the processes, and then arrange for hostels for staying there or elsewhere, teaching to be initiated, prepare all that which is required so that the coming session we start from there, including not only teaching and also research. In case of Assam, also similar situation. And on 6th of July, Honorable Minister, would have a program to launch this particular, institution and dedicate to a nation. With all the infrastructure, all the kind of work that we are doing, and if you do that, so we have to prepare for that. So 6th of July, and we have to prepare. And similarly, maybe 25th of September, the Assam, also would be dedicated to the nation. So this dedication to the nation that would be there, and what would be the details we have to discuss. And that will be, and this is just to indicate that how things are moving at higher levels and how prompt and active we have to be so that we don't lose out, and we take always the leadership position and then showcase our performance. And if you are lagging behind, we don't do as per the expectation, obviously we can't take that kind of position. Then coming to IRI Jharkhand, certainly when Dr. Ramani was there, director of the Lakh Research Institute. I don't know whether Dr. Sharma is here. He was also in charge for some time. Dr. K.K. Sharma of Lakh Research Institute. There are several other directors present here. Dr. Patnaik is here, and Dr. T.R. Sharma, Biotech Institute Ranchi is here. I think a few other directors are also here. So welcome all of you. And I was talking about directors, the then director of Lakh Research Institute, Dr. Ramani, and in fact, all initial planning he did, the area demarcation, and very kind of with a great deal of zeal, he used to really get involved. And this area, 1,000 acre, that you see today, what Dr. Behra was presenting, and again, Dr. Behra has been putting a lot of efforts for several, more than a year now. When we thought probably, we need to push this activity further, and IRI, there are several changes. Dr. Prasad, Dr. S.K. Singh, and now Dr. Behra. So there are several people who changed at IRI, campus, and I was director also. There are a lot of demands. So we are discussing on almost daily basis that how to really promote the activities there. So thanks to all of you, and those who are present and those who are not present. So all the efforts which have been put in, so it has led to this stage. So now that we have this institute, so unfinished task has to be really planned. So these are some of the, already I have spoken about 2 activities. One about the 6th of July, and the other about the kind of planning we are doing now in terms of the unfinished task, whether the guest house or something, whatever is going on, by 6th of July, if we can inaugurate them, any one facility if we can inaugurate.
and then the rest of the planning process, how we are planning to start the session, that part needs to be really planned and then presented before the Honorable Minister, so that he is assured about our commitments. So these are the kind of few things which you have to do for 6th. 6th is a program, but the rest of the things are ancillary, but we should remain prepared. While we are presenting before him that subsequent ones, whether to have students and where and how much and how many, and teaching, who will be doing, and the research, where, how to do, all the details planning have to be done. Okay, so having this institution there is a good thing, but that the remoteness of the place, and I have gone twice, and the place is remote. Twice or thrice I have gone, and then even today, you don't have any kind of market, good market nearby. So staying there, and then depending on outside markets, and then mobility and vehicle availability, all these issues are very, very crucial. But then what is the purpose of this institution? Dr. A.K. Singh suggested, Director ICAR-IARI suggested that I should speak on bringing green revolution to Eastern India, and how this institution can play a very significant role. Certainly, that's the big idea, to have this institution there, and can this institution live up to the expectation? Dr. T.R. Sharma did mention about having a composite structure, the crops, the horticulture crops means field and horticulture crops, and then having animal husbandry, and then fishery, of course, natural resource management, and all together there. And these have been designed, obviously keeping in mind and the region and its natural resources, the endowments which are there, natural resource endowments which are there. You know very well that how this region is endowed with. So if we talk of water, that's the plenty which is available. And but then the kind of rainfall variations, which is so much, from 1100 millimeter to almost 2000, even more than 2000 millimeter at times. So also in this region. So given this huge rainfall, so obviously it has it tells us many things. I don't have to really speak everything about it, but I'll give some hints on how do we plan our programs there. Research programs, and if we don't plan now, so obviously we can't have very successful institution coming up. And we, at this point in time, we have to really build this institution with rigorous planning. And we have to build the research programs, solid research programs for tomorrow. And probably this is the message for this 6th Foundation Day, that we have to build the programs and start with research programs besides the academic programs. So first one, I said that water and plenty of rainfall, but the average is 1500 millimeter. But see the range of variation over different years in different states in the region. So 1100 to more than 2000 millimeter. So it's a huge variation. And some years, there is a drought. So given this uncertainty of rainfall there, one side there is plenty, and the other side there is also, in fact, this happens in the same year, in the same season, drought and then flood together. So this need to be really, kept in mind when we are designing our research, programs for future of this institution, to develop and to work on and design further details based on the overall recommendation. And given this region, and you also know that large part is alluvial, fertile soil,
close to 40% of it good soil, 40% is alluvial fertile soil. But at the same time, there are also difficult soils. You have coastal salinity, say in West Bengal, and Odisha. And similarly, you have acid soils, close to 10 to 11 million hectares, maybe around 10 million hectares of acid soil. And given this, acid soil being predominating there, problem soils, and then coastal salinity, our other institutions are addressing. But how this institution can interface with other institutions who are already working and build programs in association with other institutions to address this problem. When I say that water availability, that this region is also having, undulating hilly terrains, and particularly in Jharkhand and in Odisha. And there is also forest area. Forest land in this region is almost 20 million hectares. And given this 20 million hectares, close to 20 million hectares, there will be a little bit of variation, year to year, over 3-4 year period, the data could be a bit old, but around that. So around 20 million hectares of forest land, and also wasteland, about 70 million hectares of wasteland being there. And we talk of in Jharkhand particularly, when the uplands where water is so devastatingly limiting, and you go from Ranchi to Goria Karma, and you find rice being grown there. And why not horticulture? The Patna Institute has a center in Ranchi, and beautiful, so many varieties and beautiful crops of vegetables, for instance. But horticulture, so much potential. We have not been able to really harness the benefit of that. The productivity of vegetables also, and also fruits are relatively low. If you see the Indian average, and almost 2 tons to 3 tons. In fact, in case of fruits, almost 3 tons, less. So productivity 2 to 3 tons being less in this region with regard to fruits and vegetables. So that's something which is a worrisome factor, and we need to really see how this institution can play a very significant role in this region. I know that the potential of water potential of irrigation in that region is quite high, and you'll be surprised. Despite this rainfall, only 32% around is irrigated, and 70% is rainfall. That is something, again, a very big challenge. And how do we really address this? And if you see the underground water resource and how much is utilized, the groundwater draft, if you say Indian situation is about 58% or so, while in this region it is around 35%, maybe 36%. So much of rainfall and groundwater, but its utilization is so little, and every season crop suffers from drought. So these are the kind of situations which can be alleviated, can be addressed, and we should be really taking advantage of this. How do we really holistically plan to take advantage of all this? But at the same time, the region has difficulties. But before I go to the region other difficulties, let me tell you that fishery, so when the water is there, obviously fishery has tremendous potential. And maybe almost 1/3 of fishery production, fish production comes from this region. Close to, Dr. Jena might correct, about 4 million hectare comes from this region, 4 to 4.5 million hectares. So given this potential in fishery, given the water, plenty of water available, and what is that we are waiting for? And fish consumption being quite high, West Bengal, Odisha, the consumption, and Bihar,
consumption being so high. Jharkhand has come up recently with regard to fishery, but not the other states. So West Bengal has a traditional strength in terms of seed production, but then the productivity and production, we have so many gaps there, and we need to really address. And similarly, the livestock, if you see the livestock, again, so much scope to do. In terms of, if you see poultry, for instance, you have almost 135 million poultry in that region, as compared the Indian population of 730, maybe a little more than that, million. And similarly, I'm talking about the old census. That recently they have some changes, and then the livestock also about 140 million there, and as compared the Indian population of 515. Now this is a little bit revised. So, given that huge population there in that region, with regard to livestock and poultry, what is the productivity? They're all local types and little bit upgraded types, and the productivity is so low. You talk of and then that's the scope of the backyard poultry and duckery being so huge. How do we really build the program of this institute, given all this? But at the same time, we must not forget that this region has highly fragmented land holdings, One is small land holdings, because 85% are truly marginal in this region. 87% are marginal actually. And more importantly, the fragmented land holdings. Land consolidation has not happened. Take example of Bihar, and even in Odisha, is partly done. So land consolidation hasn't happened. That's the biggest challenge to apply technology. And Dr. Chaudhary is also listening at how our ecosystem models work here. And if you remember, my DDG colleagues know very well that we had a presentation by International Food Policy Research Institute, the New Delhi Center, and they prominently presented and focused on the returns from investment. The marginal rate of returns, they highlighted all that research we are doing. When that research goes to high income state and medium income state and then low income state, the return is maximum from the low income states. And in the eastern region, these are the ones, most of them are low income states, and the returns from investment, and investment in research is for whole country. But when that product of that investment goes to these low income states, the marginal rate of return is 9.9. Can you imagine 9.9? 1,000%. 1,000%. If you invest 1 rupee, you get almost 10 rupee additional. 1 rupee additional investment gives you 10 rupees at returns, and that's the kind of marginal rate of return in this region. And you can imagine the kind of strength that we have in this region. So these are the kind of situations I described, and I think we can do so much, and I'm sure we should be able to do it. And but at the same time, I'm concerned that this region is also having quite a number of institutions. So it's not that region is not having institutions. So my concern is how these new institutions will be coming up and then going along with the other institutions in the region. You take Krishi Vigyan Kendras. Dr. A.K. Singh might correct me. Around 190 Krishi Vigyan Kendras would be there in this. 190 to 92 Krishi Vigyan Kendras would be there in this. Number might have increased during this period, but around 190, at least 100 Krishi Vigyan Kendras are there. So, given this, Krishi Vigyan Kendras are there, how do we really capitalize on this? And then interface, with the farmers.
the Bringing Green Revolution to Eastern India program, which was running here. I was monitoring from ICAR-IARI Cuttack, and I have gone to every state and have seen, and all these states are included in that particular program. And I have interfaced, I have seen the situation there in Eastern India, and how things are happening, the lowest productivity. And that got a boost by this particular program, Bringing Green Revolution to Eastern India, BGRI program. And but then food grain productivity, less than 2 tons per hectare. That's the kind of average you see in this region. And when I was there, Odisha's rice productivity went beyond 2 tons, and went up to 2.3, 2.4 tons. And Chief Secretary wrote a letter appreciating our efforts by ICAR-IARI in Odisha, that it went beyond 2.3 tons. I'm talking of rice, not paddy. So given this low productivity and given this history of programs which were there earlier and still running in some format or other under RKBY, and also our institute there in Patna. ICR Institute is also having interface meetings with the state governments. Given all these, the role of these institutions has to be really, thought about very clearly, so that we don't really repeat what things are happening, and we do something new, more challenging, and then bring the institutions, work along with the institutions who are already there, and so that we are successful. And this is a big challenge. This is a very, very big challenge. And so also in education front, Dr. Agarwal, and there is, a Central Agriculture University, Dr. Rajendra Prasad, the Central Agriculture University, is not very far from there, from Bari. And also we have about 10 other state agricultural universities in the region. You have almost maybe 3 in Bihar, and I think 3 in West Bengal, and this includes animal husbandry universities, and similarly you have 1 each in Jharkhand and Odisha, and in Uttar Pradesh also you have 1. So these 10 universities and 1 central agriculture university, they're being there. And in education sector, in academic sector, how this institution would operate, what should be different, what is that difference this institution can make in academics? And if we don't really plan it out, I don't think it will be able to deliver. And it will be just a repeat of what others are doing. And how different it would be. So this is the crux of the matter. And this is the challenge DDG Crop Science Sir and Dr. A.K. Singh Sir and DDG Education Sir, we have to really plan it out. And similarly, the institutions, at least 16 institutions, research institutions are there of ICAR in this region. And these 16 institutions, they have their own strength, tremendous strength. And while we are starting something, we have to see that we are not repeating anything what they are doing. And how do you really do this? Or we bring all of them together and build a platform, and so that the role of these institutions, the institution is appropriately identified. So on this day, I must urge all concerned to really have a workshop on this. Both academic program could be a workshop, how to really build, whether we should go for undergraduate, program there, or only postgraduate, and how big postgraduate programs should be there, and what all we should be teaching there. That would be different from the other institutions, universities, and then central university would be doing, and how many students, what should be the, all these need to be really planned out properly. And similarly, and also, Dr. T.R. Sharma, director in charge of Biotech Center Institute there, has popped up his face, and that tells me that is also another institution supposed to be a deemed university. And we are also building that up to have our academic programs there.
And how do we really manage and remove duplications? So this is a big challenge, Dr. T.R. Sarma Saab, DDG Crop Science, and kindly look into it. And whether we need to have all these, or need to have mergers, or need to have interfacing and collaborative programs and complementarity to be harvested in the process. How do you really do this? Sometimes it worries me, and but then sometimes, given the diversity of this country, I think probably we can still manage. So, but then it requires quite a bit of out-of-box thinking to move further. And similarly, with regard to research, and another workshop on that, how do we really do that? Build the program for this institute for today or tomorrow. Without that, it will be a failure. In this region, what is the impact of climate change? What is the impact of climate change? So unless it is characterized, and particularly taking into account the forestry and wasteland systems which are there, how do we really make use of that? More of agroforestry programs to be brought in, and the wasteland is utilized. And particularly in Jharkhand, you just move around, you'll see the kind of wastelands there. So, the mining area, and where the old mines were there. So and several other areas, so it requires our engagement. I was there in some of the programs. Dr. B.P. Bhatt may not be here today. I don't know. And one of the programs there in the KVK program, and I have seen that how the local tribals, they get diverted, to other activities, because we have not been able to really engage with them, appropriately. So the social problems there in that part of the country, can be very effectively addressed if we can have through our KVK program, very meaningful engagement with them. So we had, I remember a small pond there, and planting around, and distribution of fruit, seedlings there. So all that, and many of them were there, we are interacting one-to-one. And, I found that there is quite a bit of interesting, kind of features of that engagement. So I think we have plenty of opportunity for doing that. Dr. Chaudhary is here, and rubber dam is close to his heart, and in Jharkhand, and the streams which are there, so many. And the other day in the water AICRP workshops, mention was made that the streams are dying and drying up. And how do we really activate these streams and harvest the water there? Extensively use rubber dams, and then use the water for purposes. How do we really do this, and what could be a comprehensive plan of action for that region? And the watershed planning, and then region wise, and taking advantage of rainfall and utilizing water effectively, and then the crop diversification, which is so crucial. Dr. T.R. Sarma mentioned crop diversification is so crucial. So I think, and why crop diversification, even diversification to other things, and fishery and animal husbandry. So there's tremendous scope. So I have taken, already it is going to be 1:26. That's the original time, and that is what it was planned for. And we lost about half an hour in the beginning. We could have finished by 1 o'clock, half an hour late. So 12:30 to 1. But without taking more time, so as always, many things to talk about. So, but this is an opportunity for us, I must tell. Challenging opportunity, I would say that way. And it cannot be just taken as a routine, engagement. If we take it as a routine engagement, we will be losing out very, very badly.
because we have institutions, we have universities there, and we have KVKs there. A new institution to build its own program and stand up on its own and showcase its achievements, this is a very big challenge. And today is the day to take that challenge head on and then plan it out so well that we deliver at the end of the day. So I'm sure, my colleagues who have joined there, they will take it seriously and do the job very neatly and diligently, and so that we don't really fail. So with this, I congratulate everybody, and I express my sincere thanks to Dr. A.K. Singh, Director IRI. He is a very good orator, but we should have been given time to speak. He just welcome in a few words. So next time, so IRI Assam program, he should speak for 20 minutes. So that is instead of DG speaking. So anyway, so Dr. A.K. Singh, thank you very much. And thanks to all the colleagues, the DDGs, always a pleasure to have all of you. And also, we are almost 124, and there are almost 135, 40 of them were there. Now it is 124 participants here. And, I think all of us are from ICAR. And the other day, the presentation in the Finance Commission, before Finance Commission, you all have seen my DDG colleagues, and it went on well. And yesterday, I got the message that, the slides, have to be sent to the Honorable Chairman of the Finance Commission. At night, they were sent, and a lot of discussion is happening on those. And, the kind of impacts, which were presented, Pusa Basmati 1121, CO 238 sugarcane variety, and SD 2967, and pulse revolution in general, how our things contributed. So these are the three things, in quantified economic terms, what was presented. So I think there will be a lot of churning, after this presentation. Honorable Chairman did briefly mention about it. So this is going to really, and we have to be really forceful in some of these things what we are doing, and unless we do that, we will be left out. So we have to keep in mind that how IRI Assam and IRI Jharkhand to be the leaders in these regions, and how do they first of all build them up? Not easy, because both were inaugurated by Honorable Prime Minister. Anytime we may get questions and queries from Honorable PM's office. So given that, keeping that in mind, we have to plan it out. So we have plenty of opportunities to do that, and I'm sure you'll be able to do that. So thank you very, very much to all of you, and wish you all the very best. And particularly the new scientists who have joined there, hearty congratulations to all of you. And everybody concerned, congratulations and all the best. Thank you, sir. Girish, just give me 1 minute. Sure, sir. Sure, Thank you, sir, so much for so eloquently defining the problems in research, teaching, and extension. I have taken note of all the points that you have mentioned. I am sure I would not have certainly, it was beyond my imagination. So I would not have done that job in any case. So it is good that the time has gone to you and you have really defined the problems so well. And we will certainly very shortly organize this two group meeting, one for research and one for education, to check out the agenda for future. If you permit, sir, I would like if the scientists who have newly joined, 10 of them, they can briefly introduce themselves. Yeah. Many of them, they have been your students, and they, yeah. Priranjan, can you please have introduction one by one? Yes, sir.
I'm Priyaranjan. I'm Priyaranjan Kumar, Principal Scientist, Plant Breeding. I'm in service of ICAR since 1999, and I have joined this institution, new institute, on 1st June this year. Which subject? Where from you are? Sir, I have done my MSc and PhD. Do not do that. From you are a genetics breeding person, and you are from where you were transferred? Sir, I was at the regional station of ICAR-IARI Patna, the station located at Ranchi. I was there for 5 years. Okay, thank you. Next. Sir, good afternoon, sir. I am Dr. Good afternoon. I am Dr. Pankaj Kumar Sinha, scientist in agriculture extension. Earlier, I was posted at ICAR-IARI for NEH region Umyam, and I have joined this institute on 22nd June of this month. And I completed my both MSc as well as PhD from IRI New Delhi. Okay. Okay. Thank you. Next one. Thank you, sir. Next. Sir, good afternoon. Myself, Dr. Manoj Chaudhary. My discipline is soil science. Yearly, I was joined in the ICAR-IFRI. There I worked 7 years and 6 months there. Okay. Now okay, I will join this institute on 26th. And my BSc and PhD from BHU and MSc from Kanpur. Thank you, sir. Okay, thank you, thank you. Good afternoon, sir. Myself, Deepak Kumar Gupta, ARS in Environmental Science Division. I did my BSc Agriculture from Visa Agriculture University, MSc in Environmental Science from IARI, PhD in Environmental Science from IARI. I was posted in Regional Research Station of Kajri at Pali, and I given my service 6 years there. And on 26th of June, I joined here. Okay, 26th of June. Okay, good. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Deepak. Good afternoon, sir. I am Krishna Prakash. I did my BSc from Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University, Pusa, Bihar, and MSc and PhD from IARI in Division of Plant Genetic Resources. And I have qualified ARS in spices plantation, medicinal aromatic plants. And I was posted in CPCRI Kasargod, Kerala. And on 22nd June, I have joined here this Premier Institute, ICAR-IARI, Jharkhand. Okay, good. Thank you, sir. Good afternoon, sir. I am Priti Singh. My discipline is soil science. I did my MSc and PhD from BHU. Earlier, I was posted at CPRI, Shimla, main station. Thank you. Good afternoon, sir. Myself, Himani Priya. My discipline is agricultural microbiology. Sir, I have done my BSc from Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University, and I did my both MSc and PhD from Division of Microbiology, IRI, New Delhi. And I joined ICAR in 2018. And earlier I was working at ICAR National Rice Resource Institute, and I have joined this institute on 12th of June of this year. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Anybody else? Good afternoon, sir. I am Santosh Kumar, scientist in genetics and plant breeding. I have my BSc from Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University, Pusa, Samastipur, MSc from TNU Coimbatore, and PhD is yet to be awarded from the BHU Varanasi. I joined ICAR on 2nd July of 2018, and I was working in the IAMR Ludhiana Regional Station, Begusarai. I joined this institute on 8th June 2020. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Oh, you are muted, you are muted. Unmute yourself. Unmute yourself.
You are not audible. Anima, unmute yourself. Unmute. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good afternoon, sir. Myself, Dr. Anima Mehto, scientist in genetics and plant breeding, and I did my BSc from OUAT Bhubaneswar and MSc from CSK HPKV Palampur, Himachal, and PhD from BHU Varanasi. Previously, I was working at Indian Institute of Seed Sciences, MAU, and I joined this institute on June 16th this year. Thank you, sir. Okay. Very good afternoon, sir. Sir, I am Monu Kumar. My discipline is genetics and plant breeding. I did my graduation from Banaras University, masters from ICAR-IARI, New Delhi, and continuing PhD at BHU. Earlier, I was posted at ICAR-IARI, Bharatpur, and I joined this institute on 4th June of this month. Okay, all the best, Manu. Thank you, sir. Okay. Okay, so let's close it up. धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर रश्मि अग्रवाल मैम को, डीन एवं संयुक्त निदेशक शिक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, अपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए। प्लीज मैम। Thank you, Brijesh. Can you hear? Yeah, we are hearing. Good afternoon, everyone. And first of all, my congratulations to all of you on this Foundation Day celebration of ICAR-IARI Jharkhand. Honorable Shri Kailash Chaudhary ji, Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, who just left. He was the chief guest of this function. Honorable Dr. Trilochan Mahapatra ji, DG ICR and Secretary there. Our director, Dr. A.K. Singh, all the DDGs who joined this important celebration day, Dr. T.R. Sharma, Dr. J.K. Jana, Dr. A.K. Singh, and Dr. Chaudhary, Dr. A.K. Singh, DDG Horticulture, and Dr. R.C. Agarwal, DDG Education. All the officials of ICAR, Assistant Director Generals who have joined, Dr. D.K. Yadav, and all the officials of ICAR-IARI. I must say Dr. PD, Dr. Man Singh, other heads of the division, professors, faculty, and directors of the ICAR institutes who have joined this important function, and students, faculty, staff, and others who joined this function. First of all, I'm gratefully thankful to our Minister of State, Shri Kailash Chaudhary ji, who, in spite of his so busy schedule, he could make up and come and guide us. He gave us very important points and also suggested that whatever our significant achievements are there, they should see the end, they should reach to the farmers. I'm so much thankful to our ever dynamic Dr. Trilochan Mahapatra ji, our DG, and he has given us a lot of suggestions to bring green revolution in Eastern India. And the points which he has highlighted have been noted down, sir, in developing the solid research programs in different areas and the gaps which you have identified and told us, and also in the areas of academics. So this we will really take up, and also the suggestions for finishing the unfinished task so that some of these can be inaugurated in July month. We are so grateful to all DDGs, specifically Dr. T.R. Sharma, who recently joined and gave us a lot of insights and inputs for developing the programs, particularly at ICAR-IARI Jharkhand, and also Dr. R.C. Agarwal and Dr. A.K. Singh, DD Extension and Horticulture, because they are the resource persons. All the motivational and infrastructural development is done because of their input and their guidance. All the ADGs are having their support system to develop ICAR-IARI Jharkhand. I must at this stage be grateful to our own IRA system, sir. Nodal Officer Dr. T.K. Behra, who has really worked so hard in bringing in the day we are celebrating today, and also the Chief Administrative Officers, Pushpender ji, our S.K. Sinha ji, Mittal ji, and all the concerted efforts of all the officials of ICAR-IARI, who have really worked hard to bring in this day that we are celebrating so much of achievements of ICAR-IARI Jharkhand today. I'm also thankful to all the professors, heads of the divisions, faculty, staff, students who joined this important celebration day, and also
I'm sure they will be all be inspired and motivated by, sir, your guidance, because you have highlighted so much of the areas and the gaps which can be addressed in the Eastern India. So all of us together can bring in another green revolution in Eastern India. So with these words, I thank you once again all. I again very much thankful to our director, sir, Dr. A.K. Singh. In a very short notice, with his guidance, with his support, we are able to organize such functions. And sir, in this COVID-19 has make us learn so many things, sir. With a short period, how we can quickly organize and very successfully do many of these gatherings on Zoom. Otherwise, we require more time, sir. For this such kind of meetings, we really require in less time. Also, we can join everyone together and do our job in a quicker manner with no fund as such, with very less of funds and with more of interactions, one-to-one interactions, sir. So I'm so thankful from the core of my heart to each one who has made this function so successful. So once again, congratulations and thanks to all of you, sir. Thank you so much. Okay, thank you very much. Thank you so much. Special thanks to Dr. Yadav and Dr. T.R. Sharma from my side. But for their efforts, it would not be possible to take. ठीक है, thanks to all of you, and ये तुषार बेरा स्माइल कर रहे हैं, उनको भी thanks दे दीजिए.